Now belladonna. Belladonna consists of a tropane alkaloid. Belladonna consists of a tropane alkaloids. So we'll see about the belladonna. So belladonna is known as a belladonna leaf, belladonna folium, deadly nightshade leaf, or European belladonna. So belladonna is known as a deadly nightshade leaf. Why it is known as deadly nightshade leaf? I will explain. कि जो यूरोपियन लेडीज होते थे, तो मतलब यूरोपियन लेडीज में काफी अच्छा दिखने का उनका एक लेडीज में होता है ना टशन, मेरे को अच्छा दिखना है, तो उस टाइम के लेडीज जो अच्छा दिखने के लिए क्या करते थे, ये बेलाडोना का लीव्स लेते थे, उसका जो रस है वो रस डालते थे अपने आंख में. as belladonna has a atropine localite, so atropine causes mydriasis. Okay, so it will increase your pupil size, कि आपका आंख जो है खुल जाएगा, आपका आंख बड़ा कर देगा. तो जो लेडीज होता है वो एट्रोपिन का रस डालते थे आपने आंख में, ताकि आंखें बड़े दिखे और सुंदर दिखे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डेडली नाइट शेड लीफ. सो यूरोपियन बेलाडोना. सो बेलाडोना इज आल्सो नोन एज बेलाडोना लीफ, बेलाडोना folium, deadly nightshade leaf, European belladonna. So what is the biological source of this belladonna? Dried leaves and other aerial part of Atropa belladonna, family Solanaceae. Dried leaves of Atropa belladonna, it is known as European belladonna. Atropa acuminata, it is known as a Indian belladonna. Both belongs to family Solanaceae. यहाँ पे कौन सा वैरायटी किसका है ये याद रखना है. So Atropa belladonna is European belladonna. Atropa acuminata is a Indian belladonna. Both belongs to family Solanaceae. So it should contain not less than 0.3% of total alkaloid calculated as L-hyoscyamine. And atropine is nothing but the racemic mixture of this L-hyoscyamine. Atropine is a racemic mixture. ये आपको 2-3 बार बोला हुआ है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा है. Lot of times they ask in the Niper और GPAT में भी पूछते हैं. ये बाकी का ज्योग्राफिकल सोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. कल्टिवेशन कलेक्शन भी इसका इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ दो. Microscopic character. Now all the Solanaceae family will have specific microscopic characters. Solanaceae family जो है उसमें क्या होगा, अनिसोसाइटिक स्टोमेटा होगा. अनिसोसाइटिक स्टोमेटा मतलब क्या होता है अनिसोसाइटिक, ये आपको प्रीवियस कोग्नोसी के लेक्चर में मैंने बोला है. सो ये स्टोमेटा इज covered by varying number of guard cells, and out of this one cell is smaller than other, and it is known as anisocytic stomata. So anisocytic stomata is a characteristics of your belladonna. Okay, then unicidate multicellular covering trichomes, unicidate granular trichomes, then sandy or microsternal calcium oxalate. So it is a microscopic characters of belladonna, that is sandy or microsternal calcium oxalate, anisocytic stomata, covering and granular trichomes. That's it. Now what is the chemical constituents of belladonna? So it will have 0.4 to 1% of alkaloids. So main alkaloid is L-hyoscyamine, and then atropine, and the atropine is nothing but the racemic mixture of L-hyoscyamine. Then other alkaloids are belladonine, scopolamine. Scopolamine is also known as 1-methyl ascolatine. In hypermethylphosphatase, hyoscine, pyrroline, N-methyl pyrroline, both are the volatile in nature. Okay, so N-methyl pyrroline and this pyrroline, they are volatile in nature. Okay, then what is the use of this belladonna? It is a parasympatholitic. It is a parasympatholitic, anticholinergic, antispasmodic. And again, this atropine is used as an antidote for opium and chloral hydrate. So there are different adulterant and substituent for this belladonna. First one is Phytolecca americana, Solanum nigrum, and Anethus glandulea. There are three adulterant: Anethus glandulea, Solanum nigrum, and Phytolecca americana. So out of these, Solanum nigrum was asked in the GPAT. So substituent used for the belladonna. या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, which one of the following is not a substituent for belladonna. ये 3 देंगे और 14 एक ऑप्शन देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना है. ये एट्रोपिन के लिए एक टेस्ट है नोन एज विताली मोरिन रिएक्शन. सो एट्रोपिन टेस्ट, एट्रोपिन alkaloids or tropane alkaloids, they are identified by विताली मोरिन reaction. This is the structure of atropine, scopolamine and hyoscine. Atropine का जो plant है ऐसा लगता है, ये berries वगैरह रहता है. Now next one is Raoulpia. So Raoulpia, it is also known as Raoulpia root,
serpentina root, or it is also known as chota chand, sarpagandha, pagle ki dawa, India snake root, chandrika. All these are the synonyms for Rawalpia. So chota chand, Rawalpia root, serpentina root, sarpagandha, pagle ki dawa, Indian snake root, chandrika. So why it is known as serpentina? The snake root, why it is known as serpentine root or snake root? कि रावलपिया का जो रूट्स है वो आपके सांप जैसे स्ट्रक्चर है, उसका सांप कैसे ऐसा घूमता है तो वैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इट इज नोन एज अ सर्पेंटिन रूट और स्नेक रूट. ओके, नाउ व्हाई इट इज नोन एज पगली की दवा? because see Rawalpia alkaloids are used in the various treatment of psychosis, that's why it is known as a pagle ki dawa. It is also known as chota chand, Indian snake root or chandrika. So you have to remember the synonyms also. Now biological source, these are the roots of Rawalpia, they will look like a snake, that's why it is known as serpentina root. Now biological source, dry roots of plant known as the Rawalpia serpentina family Apocynaceae. It should contain not less than 0.14% of alkaloids calculated as reserpine. Okay, so reserpine was first found by Dr. Rawlov. That's why it is known as the Rawalpia. The plant was found by Dr. Rawlov. That's why it is known as the Rawalpia. ये बाकी cultivation collection ना important नहीं है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर एक बार याद रखोगी. इसमें स्ट्रेटिफाइड कॉक्सेल होता है, पैरेंकाइमा स्टार्च ग्रेनस्टोन सेल होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है. नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. So Rawalpia alkaloids are classified as indole alkaloids, indoline alkaloids, indolenine alkaloids, oxindole, pseudoindole alkaloids. So these kind of alkaloids will be there in the Rawalpia. Okay, indole, indoline, indolenine, oxindole, then pseudoindole alkaloids. Alkaloid, most important alkaloid is alkaloid of reserpine and resinamide. These two alkaloids are very important, reserpine and resinamide. They are the esters derived from methyl reserpate and trimethoxybenzoic acid. If you do the hydrolysis of this reserpine, you will get a base plus methyl reserpate base plus trimethoxybenzoic acid. एक बार पूछा था GPAT में. So alkaloid like reserpine and resinamide, they are the esters. Okay, esters of methyl reserpate as a base and trimethoxybenzoic acid. So less important amino acid from this Rawalpia is reserpine, desreserpine, asmalicin, asmalin, serpentin and eomine. So it is used as an antihypertensive. Antihypertensive means to decrease the blood pressure. It is used in the antihypertensive. It is used as an anxiolytic, and it is used in the treatment of mania, depression, okay, and psychosis. That's why it is known as a pagle ki dawa. Then there are two drugs, allied drugs known as the Rawalpia vomitoria. Then this is a P. yohimbina. Then Rawalpia tetraphylla, Rawalpia perkins, Rawalpia ophiriza mogus. ये छोड़ दो, उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं. केमिकल टेस्ट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना है कि आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इतना उसका इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उसका सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट. ये Rawalpia में का, बाकी का जिसका जो इम्पोर्टेंट है मैं टाइम बोल दूंगा. तो ये हो गया आपका इंडोल अल्कलॉइड्स. ओके, सो ये इट इज अ methyl reserpate. This part is known as methyl reserpate. This is trimethoxybenzoic acid. Trimethoxybenzoic acid. So it is they are esters of this methyl reserpate plus trimethoxybenzoic acid. So you can see here ester link. So reserpine, reserpine में इधर यहाँ पे methoxy ग्रुप होगा किसमें, reserpine में, और डेसिप्रिड में क्या होगा, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. Then again yohimbine और asmalicin. Now glycosides 12 बजने तक अपन लेंगे, आधा घंटा है. Now there are certain drugs which are mentioned in the your syllabus. ठीक है, उसमें का भी क्या इंपॉर्टेंट है, आपका बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें केमिकल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट है तो वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कौन सा क्लास अल्कलॉइड का कौन सा है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, ये मेरे बुक में दिया है. बाकी का वो एक बार आपको बुक में से भी पढ़ना पड़ेगा, जितना दिया है उतना. तो ये अभी स्लाइड में सब कुछ इंक्लूड नहीं है. ठीक है, अभी ग्लाइकोसाइड्स. सो व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स? Glycosides are also organic. They are also secondary metabolites. They are also organic compound from plant and animal sources. Okay, these glycosides on hydrolysis will give you two parts. One part is a sugar part and second part is a non-sugar part. So sugar part is known as a
sugar part is known as a glycone. Sugar part is known as a glycone, and non-sugar part is known as a aglycone or genin. So glycosides are the organic compounds of plant and animal origin. When acid or enzymatic hydrolysis, they will give you two parts, two moieties. One part is the sugar part and second part is the non-sugar part. Sugar part is nothing but the sugar part is known as the glycone, non-sugar part is known as the aglycone or genin. So chemically they are the acetals of sugar and sugars of ether, and it is formed by interaction of hydroxyl group of non-sugar part and sugar part. कैसे होता है क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ. The hydroxyl group of a glycone may be alcoholic or phenolic, doesn't matter. So remember here one thing: most of the alkaloids found in the plant they are having beta D glucose or beta D sugars. So most of the glycosides in the plant they will have beta D sugar or glucose. Then other sugars are also present in the glycoside like galactose, mannose, rhamnose, digitose, etc. So plant contains only beta glycosides, but theoretically both beta as well as alpha glycosides are possible, but plant consists of only beta glycoside. Now you can see here, this is known as the sugar portion. This is known as sugar portion, and it is glycone, and this is known as non-sugar portion or aglycone. So it is an example of steroidal glycoside. Yes, steroid nucleic acid. Now classification of glycosides. So there are different ways to classify the glycoside. They can be classified depending upon the type of aglycone portion, depending upon the type of bond formed between aglycone and glycone portion. Classification based upon the linkage, that is a linkage present in the glycoside. So it may be either C glycoside, O glycoside, S glycoside or N glycosides. So C glycosides, O glycosides, S glycoside, N glycoside. So classification based upon the linkage present across the glycone and aglycone part. यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, so it is O glycoside. अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो it is C glycoside. यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो N glycoside. यहाँ पे सल्फर होगा तो S glycoside, right? So C glycoside example anthraquinone glycoside such as a cascaroside, cascara, aloe from aloe, aloin from aloe. Some members of flavone type of glycoside. C glycoside. O glycosides, they are very common in the higher plant like senna, rhubarb. S glycoside, for example, isothiocyanate glycoside from green and black mustard. Then N glycoside, nucleosides, they are example of N glycosides. Now classification of glycoside depending upon the type of aglycone part. So anthraquinone glycosides, for example, barbeloin, trebulin, sterol or cardiac glycosides like digitalis, thibetine. Saponin glycoside, diosgenin. Cyanogenetic or cyanoporic, example bitter almond oil, cherry bark. Isothiocyanate glycosides, example cinegreen, cinnablin. Yeah, isothiocyanate type of glycoside was asked in the GPAT. Okay, cinegreen is an example of isothiocyanate glycoside. So a class of glycoside उसके example ये important. Flavonoid glycoside or flavone glycoside, protein and zinc. Then coumarin glycosides or furanocoumarin glycoside, hydroxycoumarin glycoside. So aldehyde glycoside, example vanillin. So it was also again a question in GPAT. Vanillin is a aldehyde glycoside. Salicylin is a phenol alcohol type of glycoside. Diosgenin is a steroidal glycoside. This was again a question in GPAT 20, I think. So diosgenin is a steroidal glycoside. So bitter glycoside example gentian, picoryza, chirata, etc. So this chart is also given in the book. We have to read it. Now cardiac glycosides. ये लेंगे अपन cardiac glycoside. उसके बाद खत्म करेंगे. Cardiac glycoside. Chemically, the cardiac, as the name indicates, cardiac means what? So cardiac means heart. Cardiac means heart. जो आपका दिल होता है, दिल धड़कने तो जो होता है ना दिल, तो वो दिल मतलब क्या है? Cardiac. So cardiac system. So cardiac glycosides means what? So these glycosides will have a action on your cardiac system. That's why they are cardiac glycosides. Okay, उसमें क्या होता है? So chemically a glycon, see most of the glycoside जो भी होती है उसका जो a glycon part होता है, जो भी जेनिन पार्ट होता है, उसके बेसिस पे ही उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन. जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आपका यूज होता है परगेटिव में, जैसे सेना होता है यूज परगेटिव एक्शन के लिए. तो परगेटिव एक्शन ऑफ सेना ग्लाइकोसाइड इज बिकॉज ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट. जैसे ही यहाँ पे कार्डियक एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज बिकॉज ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट. जो ग्लाइकोन पार्ट होता है वो जो होता है वो सिर्फ सोलिबिलिटी के लिए होता है ग्लाइकोसाइड्स में. जो ग्लाइकोन पार्ट होता है उसमें उसका
फार्माकोलॉजिकली एक्शन नहीं होता है, वो एक्टिव नहीं होता है. The whatever the pharmacological actions of glycoside, they are because of the A-glycan part. Remember. Now cardiac glycoside. Chemically, A-glycan part of cardiac glycoside is steroidal moiety. They are either C23 or C24 steroid because of either 5-membered or 6-membered ring, electron ring present respectively. So electron ring and position of electron ring is important. So cardiac glycoside are divided into two: cardiololites and bufadienolites. Cardiololites and bufadienolites. So in case of cardiololites you will have 5-membered electron ring at the 17th position and only one double bond, and it is attached to a steroidal nucleus through C17. I will explain. ये आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बाद में. यहाँ पे इतना याद रखो कि कार्डियोनोलाइट्स का ऑकरेंस क्वाइट हाई है प्लांट्स में. अब बिफाडाइनोलाइट्स, इसमें क्या होता है कि 6-membered इलेक्ट्रॉन रिंग होता है और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो 6-membered इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पे अटैच होता है 17 पोजीशन पे आपके स्टेरॉइडल न्यूक्लियस की. या बिफाडाइनोलाइट का नाम जो है वो कैसे आया कि एक इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बिफैलिन. बिफैलिन वाज द ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोड स्किन और it was a C24 compound. That's why bufadienolite, and its occurrence is very low in comparison of cardiololites. यहाँ पे देखो, it is a structure of cardiololites. So it is a A-glycan part. This part is a A-glycan part. This part is a glycan part. So it is a bufadienolite. Sorry, it is a cardiololite. Sorry, it is a bufadienolite. It is a cardiololite. So ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है कार्डियोनोलाइट का और ये स्ट्रक्चर है बिफाडाइनोलाइट का. कार्डियोनोलाइट्स में क्या होता है कि 5-membered इलेक्ट्रॉन रिंग होता है. ये देखो 5-membered इलेक्ट्रॉन रिंग इज प्रेजेंट ऑन द टॉप 17 पोजीशन. और बिफाडाइनोलाइट में क्या होता है 6-membered इलेक्ट्रॉन रिंग इज देयर. This is how there is a difference between bufadienolite and cardiololite. अब देखिए digitalis. It is very important for your GPAT as well as Niper. Now digitalis is known as a digitalis leaves or foxglove leaves or lady glove or finger flower. Then what is the biological source for this digitalis? So it is a dried leaves of digitalis purpurea family Scrophulariaceae. Family Scrophulariaceae. Okay, digitalis purpurea family Scrophulariaceae. Now the plant is dried below 60 degrees Celsius immediately after collecting. Whenever you will collect the plant, you have to dry below 60 degrees Celsius. Okay, and it should not have moisture more than 5%. क्यों करना है, moisture क्यों नहीं होना चाहिए, बाद में बोलता हूँ. Now cultivation is done in England and other part of Europe and also in India. Okay, so cultivation little bit is important. So biennial or perennial herb. Biennial or perennial herb. ये बाइनियल पेरिनियल क्या होता है? बाइनियल मीन्स अगर ये प्लांट साल में 2 बार आता है तो उसको बोलते हैं बाइनियल. अगर ये प्लांट एक ही बार में आता है साल में, एक साल में, तो उसको बोलते हैं पेरिनियल. सो इट इज अ बाइनियल और पेरिनियल हर्ब व्हिच इज अबाउट 1 to 2 meter हाइट. इट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स. ओके, उसका जो सीड्स है वो यूज करेंगे सोइंग के लिए. इट द प्लांट नीड हाई कैल्कारियस एसिडिक सैंडी सॉइल. मतलब जिसमें अगर उसमें ऐसे सॉइल लगेगा जो एसिडिक होगा, कैल्केरियस होगा और सैंडी होगा. टेम्परेचर 20-30, रेनफॉल 30 to 40 centimeters. Okay, so seeds of digitalis is very small and that's why they are mixed with the sand for sowing. Okay, so sowing is done in the March and April in nursery bed. Seedlings are transplanted into September. ये ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं. इसमें इतना याद रखो कि presence of moisture in the digitalis leaves will lose the glycoside due to enzymatic hydrolysis. Okay, so presence of moisture and enzyme digipurpuridase and oxidase will cause deterioration of glycoside. ये पूछा जाता है. If leaves of digitalis are heated above 60 degrees Celsius, then potency of glycoside is lost due to chemical degradation. ये भी GPAT में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कल्टिवेशन. बाकी इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, अनोसाइटिक stomata on both surface. Okay, collapsed cell covering trichomes is important characteristic. Calcium oxalate, skeleton chyma is absent. Starch grains are present. उसके बाद अभी आता है chemical constituent which is very important. Nati Valley in 1868, Killarney in 1991, and Stoll in 1938. ये तीनों साइंटिस्ट नाटी वैली, किलानी, स्टॉल, ये तीनों ने डिजिटलिस में के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट है उसको
आइडेंटिफाई किया है, उसको कैरेक्टराइज किया है. सो दे हैव contributed the structure of these glycosides. So cardinal, mostly digital is consist of a cardinolides type of glycosides. मतलब 5 membered lactam ring होगा उसमें, such as porphyria glycoside A and porphyria glycoside B. So there are two types of glycoside in the digital is porphyria glycoside A, porphyria glycoside B. Then glucogitaloxin are primary glycosides. Now other glycosides are also present like odronocide H, gitaloxin, then verodoxin, glucoverodoxin. Now hydrolysis product of glycoside, that is also important part. Now porphyria glycoside A on hydrolysis will give you distoxin, glucose molecule, distoxin and glucose molecule. Porphyria glycoside A on hydrolysis will give distoxin and glucose molecule. Okay, on further hydrolysis it will give you digitoxogenin plus 3 digitoxos. Porphyria glycoside B on hydrolysis will give you gitoxin and glucose, and on further hydrolysis it will give gitoxogenin and 3 digitoxos. ये बाद में हम स्ट्रक्चर के माध्यम से और एक बार देखेंगे. Saponin glycosides such as digitonin, gitonin, luteolin, that is luteolin is a flavonoid glycoside. Okay, and the color of this digitalis leaves is because of digitalis flower is because of this luteolin. Okay, so luteolin जो है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Verodoxin will act as a verodoxin will act synergistically with distoxin. So what is the use of this digitalis? It is a cardiotonic in the congestive cardiac failure. Means it will increase the force of contraction of your heart in the congestive cardiac failure. जो congestive cardiac failure होता है इसमें उसका यूज होता है. ठीक है, ये digitalis का प्लांट will look like this. ये जो कलर है ये कलर because of luteolin. कार्डिनोइड ब्यूफाडाइनोलाइड जिसका बोला मैंने, ये कार्डिनोलाइड का ये है 5 मेम्बर्ड रिंग, ये ब्यूफाडाइनोलाइड है. ठीक है, ये टेस्ट होता है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. सो जस्ट रिमेंबर द नेम. केलर-किलानी टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर डिजिटलिस. केलर-किलानी टेस्ट फॉर डिजिटोक्सोस. देन अगेन बाल्जे टेस्ट इज आल्सो देयर, लीगल टेस्ट इज देयर. ये बाद में आप देख लेना. उसके बाद adulteration. These digitalis leaves are adulterated with 4 kind of leaves. Okay, so leaves of verbascum, then primrose leaves, then comfrey leaves, then inula ponzia leaves. So you can identify this verbascum thapsus if present as a adulterant. It will have a definite candula type of porphyria. Sorry, this is a hydrolysis product of glycoside. Porphyria glycoside A on hydrolysis will give you glucose molecule plus digitoxin plus glucose molecule. Okay, and after on further hydrolysis it will give digitoxogenin plus 3 digitoxins. Porphyria glycoside B on hydrolysis will give you glucose plus gitoxin. Okay, glucose plus gitoxin. On further hydrolysis 3 molecule of digitoxins and gitoxogenin. Porphyria glycoside C will give you gitalin plus glucose, and further hydrolysis will give gitalazenin plus 3 digitox. That is the hydrolysis protocol. So it was all about the today's lecture. ठीक है, तो केमिकल टेस्ट याद रखो. केलर-किलानी टेस्ट फॉर डिस्टोक्सिस, देन लीगल टेस्ट बाल्जे टेस्ट है. अडल्ट्रेशन में उसका 4 टाइप के प्लांट है वो दैट आर यूज्ड एज अडल्टेंट फॉर डिस्टिलेस. दैट इज verbascum thapsus and it can be identified by Candelbar trichomes. ये verbascum thapsus जो होता है उसमें Candelbar टाइप ऑफ ट्राइकोम होता है जो आपके डिजिटलिस में नहीं होता. ठीक है, देन अगेन डिजिटलिस adulterated with primrose leaves, comfrey leaves. Okay, comfrey leaves is nothing but the symphytum officinale. Inula coniza ये एक प्लांट है. उसके बाद एक अनदर वैरायटी ऑफ डिजिटलिस है, दूसरा वैरायटी नोन एज डिजिटलिस lanata. It is known as woolly foxglove or Australian digitalis. So it is the dried leaves of digitalis lanata family Scrophulaceae, not containing not less than 1.1 to 1.14 cardiac glycoside. डिजिटल लैंडा जो डिजिटलिस में पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड्स होता है ओरिजिनल डिजिटलिस में, लेकिन डिजिटलिस लैनाटा में क्या होता है आपका लैनाटोसाइड होता है. लैनाटोसाइड्स A B C D E. ओके, सो नाउअडेज दिस लैनाटोसाइड्स आर द कमर्शियल सोर्स ऑफ डिगोक्सिन. आज जो डिगोक्सिन मिल रहा है आपको वो कहाँ से आता है, ये डिजिटलिस लैनाटा से आता है. जो ओरिजिनल ड्रग था डिजिटलिस पर्पुरिया
वो आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन अभी कमर्शियली इससे बना था। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिजिटालिस लैनाटा, डिजिटालिस लुटिया known as a straw foxglove and digitalis thapsi known as a Spanish foxglove। एक बार बुक में दिया है सब कुछ है, एक बार पढ़ लो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। So this was all about today's lecture. So we will see you in the upcoming session। केमिस्ट्री का दोपहर में एक सेशन है, उसको अटेंड कीजिए।